All right, 4 minutes to go. So let's complete the introductory part for the workshop so that we can start on time because I understand that 1 hour time is very limited. So we need to justify the time given to all of us. And I welcome all of you for this workshop. Today, tomorrow, and day after tomorrow, in between 6 to 7 p.m. And thank you all for your participation. We have with us Dr. Shalini Agarwal, Associate Professor, Chandigarh University. She is a very well-known academician and has expertise in this given field. And we discussed and we thought that why not to have some online workshop so that the knowledge can be disseminated to all the no faculty or research scholar, and we can take it forward further, scale it up. Okay, SLR, as we know, is the the first step, so we can take it to the next step in a systematic way, and that's what ma'am said. Yes, definitely we can do that, and thank you so much, ma'am, for your presence this evening. It's a great pleasure. And without wasting much time, we Right. have 1 minute to go. And I request Shalini ma'am to please take it forward. Thank you so much. Okay, sir. Thank you. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity to have this session, today's session. So let me start with it. Let me check first. Let me share my screen first. Okay. My screen is visible to all of you, Yes, ma'am, it's visible. and my voice is also clear. Yes, audible, ma'am. Voice audible. Okay, Voice so is let quite me. audible and your screen is also clearly visible, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Good So evening, let's. ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. So let's start with today's session. So we have 3 days, right? So today's session will be on systematic literature review, right? Let me increase the font size. So let's understand one thing first. What is the difference between writing a paper and writing a paper with SLR? I'll be calling this as SLR, right? Anybody here, anybody of the participant can tell me the difference between the two? Writing a normal paper uh, where we use either qualitative qualitative analysis, right? Can anybody tell me what exactly is the difference between the two things? That is writing a paper with qualitative analysis or a quantitative analysis, or writing a paper with SLR through SLR technique. Yes, Hanji, Komalji, you have raised your hand. Please tell me. Good evening, ma'am. Yes. First of all, thank you for bringing up this workshop because we are not much aware about systematic. But to what I know is Mm-hmm. writing a paper with qualitative and quantitative data is just to get a rough information. Like we have to collect the data, what is available, and sometimes the raw data also. But when we are using the systematic literature review, we don't have to do the uh, we don't have to collect rough raw data. That Yes. is what Very. I have understood. Okay. Okay. Nice. So let me take you to here. This is one paper of mine that has already been published in FIIB Business Review. So this paper, let me tell you what is the paper when we are writing with uh, when we are writing a qualitative or a qualitative analysis. So what is the sequence of a paper? First is the introduction of the paper. This is the first. Second is the hypothesis. Uh, s- uh,
conceptual framework, and hypothesis writing, right? उसके बाद there is a model building. Next is the research methodology. I'll take you to all this. I'll show you a paper onto this. So what I'm talking about is we are talking about writing a normal paper that has qualitative analysis or quantitative analysis, right? So what is this? What are the different steps when we are writing a normal paper? So first is the introduction of the paper, conceptual framework and hypothesis writing, model building, research methodology, data analysis. So it goes like this. So let me take you to one of my paper that I have written onto this. Let me take you to a model first. This is the conceptual model. Can you see to this? This is my paper. This is one of my paper that has a model, right? That has a model, and you can see here there is a hypothesis as well. There is a hypothesis. There is a variables. These are the variables. These are the moderators that I have used into this. This is a conceptual model, right? And on the basis of this model, what I will be doing is in this paper, what I have done is I have collected the data, I have collected the primary data, and then on the basis of this model, I have developed this paper. How I have developed this? This is a paper that has qualitative analysis or quantitative analysis. So what I'm talking about is I'm talking about writing a normal paper with qualitative analysis or quantitative analysis. So this is what I'm showing it to you. So in this paper, we can see to this. This is a normal introduction. This is the introduction of the paper, right? So introduction is followed by the background of the study. You can see here theoretical review, the theories that is attached to this main paper of mine. So this is the attachment theory, the hierarchy of effect model. Matlab, these are the theories that is attached to my paper, right? This is also very important when we write, when we develop a paper. So these are the various steps that we must follow. Next is the hypothesis development. Hypothesis development may, so hypothesis formulation. So citizen involvement with the campaign, this is one of my variable. This is one of my construct, right? So on this I have written a review of literature. Can you see to this? And this is my hypothesis attached to it, right? So what I'm talking about, this is a construct, and on this construct I have written a review of literature. Along with this there is a hypothesis involved, right? So let's move to, this is another construct. This is the review of literature attached to it. So you can see here this is the review of literature and there is a hypothesis attached to it, right? So similarly you go on. This is the moderator, gender and profession. So you write about the moderator and you write the hypothesis as well, right? So next is the mediator, moderator and mediator. I have made use of the moderators and mediators, and this paper is based on the primary source of data, right? So this is the mediator, emotional attachment. On the basis of emotional attachment, I have written the review of literature, and there is a hypothesis attached to it. You can see to this. Then this is a framework, right? So this is the first part. Whenever we are writing a paper, normal paper, any paper, so first important thing is to set up the objective, and the basis of this objective we develop this conceptual model. This paper is basically based on the primary data, right? So on the basis of this, that I have done the review of literature, right? You can see here there is so much of review of literature, and from the past papers you have done this review of literature and developed the hypothesis, right? So the next important part is the research methodology. So now you have written the research methodology. You have to mention about the scales that you have, the scales that you have taken from where, right? Then sample and data collection, data analysis. Next part is the data analysis, right? The primary data that you have collected. So you are going to talk about this. So this is the
and the results like this, right? So you can understand. So this is writing a normal paper, right? So but when we are writing a paper through SLR, so now what is the difference? The first important aspect in this, first important aspect, I hope this point is clear, how to write a normal paper. This is what I have shown you. Is this point clear to all of you? How to write a normal paper with the qualitative or quantitative analysis. This is a no, this is a format that we normally follow. I want the participants to raise their hands in between, because it is going to be an interactive session. It is not only the one way this thing. I want the participants to raise their hands in between all the time, right? So I hope this point is clear to all of you. Please raise your hands. Mhm. Okay, nice. Okay. So let's now understand the format of writing a paper with SLR, and what exactly is the difference. Now, when we are writing a normal paper, so what we do is we collect normally we collect either primary data or secondary data, right? So normal paper mein, right? But when we are writing a SLR, so what we do is, first important aspect is to ponder upon the research questions, right? So let me take you, the first most important aspect is to ponder upon is the research question. So let me take you to this research questions. This is, everybody, I want each one of you to read this, please. Ye पढ़े सभी, look at this. सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव ही सेट करना है ना. The first thing is, the most important thing is, we have to set down the objective. So in the introduction part, you will be mentioning about the objectives or research questions. Look at this. I want each one of you to read this, please. I want each one of the participants to read this. This is one of the paper. I'll let me tell you kiska paper hai ye. This is the paper. This is one of the papers that is a very good paper on systematic literature review, right? So what they have done is, they have decided upon the objective, and this is written into the introduction part. Just look at this, and I want each one of you to read this. What are the antecedents, decisions, and outcome of CE on social media? This is the topic basically. What are the What are the theories? pathways that would see knowledge improving the Please, can presentations? you mute yourself? Everybody, please mute yourself. What are the theories, context, and methods used to study CE on social media? What are the pathways for advancing knowledge, improving representation, and enhancing rigor with respect to future research on CE on social media? So these are some of the research questions for this particular paper, right? So this is the first important aspect when we are writing a SLR is the रिसर्च क्वेश्चंस, राइट? तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, रिसर्च क्वेश्चंस को बताना है, एंड दैट टू इनटू द इंट्रोडक्शन पार्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Now what is the difference between the two? Now what we have to do is, we have to collect the papers from some database, right? When we are doing a SLR, so what is the most important step? The most important step is that we have to collect the papers from some database. The database can be Scopus, Web of Science, and other. PubMed is also one of the open source. This PubMed is an open source, but this Scopus and Web of Science, they are the paid ones. Our college has subscribed for it, so there is no issues. Like, I have both the databases, right? So what we do is, I'll tell you how to extract the papers from the Scopus and Web of Science, right? So but before that, let me repeat what I have spoken. Writing a paper through systematic literature review. So the first important aspect is to think about the research questions, which area you want to
do the research. Let's say I want to do the research on second hand fashion, right? Let's say this is the topic that I want to do the research on, right? So the first important aspect will be to to design the research questions. The first most important aspect, let's say I want to do a research on second hand fashion. So what is the main focus of mine is to design the research questions, right? So, and this will go into the introduction part of my SLR paper, right? तो इसके लिए जो already existing papers हैं, please understand, already existing papers written by people is to be used, and on the basis of these papers you do the analysis. Please understand, the main analysis, that the data analysis that we go for, the data analysis part that we go for is based on the already existing papers written by people in the past. Ye, please, this is very very important. So let me repeat this again. When we are writing a paper with the help of systematic literature review, so what we do is we have to decide upon the research questions or the topic we have to decide. Let's say I have decided about the second hand fashion. So second hand fashion, uske baad I'll be designing the research questions, right? So what is SLR? SLR is about already existing paper written by people is to be used when we are doing a SLR, systematic literature review, right? So in the data analysis part, the analysis, you know, in this paper, just look at this, ये normal paper था, इसमें we have collected the primary data and we did the analysis on the basis of that. Can you see to it? Right, this is a quantitative analysis. But when we are talking about SLR, right, so what we are doing is we are taking the already existing paper written by the people, and with the help of these papers we are making some model, right? Let me show you some model onto this. Let's say this is the model. ये this is the model. I'll be telling you in my second lecture, tomorrow's lecture, how to make this, how to extract this model, right? Can you see, this is on impact investing. This is my another paper, and what I have done is we have extracted this model. The model consists of antecedent ADO model with the help of the ADO model. So these all factors that we have extracted from the existing papers, I'll show you how to go for it, right? Step by step. So I hope you are there with me, all of you. Let me understand how many of you are with me. Please raise your hands. Yes, how many of you are with me? Please raise your hands. Nice. Nice. Ma'am, I Okay. have a question. Yes, yes, ma'am. Ma'am, Expo is also included in the databases. हाँ जी, Expo करके जो database होता है, हाँ जी, हाँ जी. मैम वो भी यूज हो सकता है इसके लिए for collecting papers. कलेक्टिंग पेपर, मैम उसका मुझे आइडिया नहीं है. आई एम डूइंग इट मेनली फ्रॉम द स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस. Right. Yes. Ma'am, I हाँ have जी. one doubt. Yes. Ma'am, like you said that we have to do data analysis that will be based on, as I said, it will be based on already existing papers which people Yes. have already written on the similar Yes. kind of topics. But, ma'am, there is another thing which we are finding. Some papers are published and some are unpublished. So can we use both? No. Unpublished papers, how will you get those unpublished papers? And Sometimes from where? it's showing, ma'am. Sometimes it's showing. No, no, it is never shown. कहाँ पर show होता है? It is never shown. Uh, I have seen on InflipNet and Google Scholar. I think there is some confusion. It never happens. Okay, Maybe ma'am. working paper setting, ma'am. Working papers can be there, but that is not there. Working papers, of course, can be there. Yes. Right. So, okay, so let's start with this, right? So let's start with the SLR, right? So what is now the next important aspect? First is to decide the research topic and questions.
So this is the first important aspect. So what is the another important aspect onto this? So let's understand key. The next important aspect is to extract the papers from, let's do it from Scopus database, right? So let's extract the paper from the Scopus database. So let me take you to a Scopus database. So here it is a Scopus database, scopus.com, right? So because our college is has given us the access, so we do have this access. So let's understand. Let me take you to scopus.com. Is opening up. So this is the homepage that you will get, right? So when we talk about the Scopus database, it's a very it has a huge number of papers, a very huge number of papers, Scopus database, right? And it has unlimited things that you can do into it, this Scopus database, right? So let's move to this first thing, the important aspect. Let's do this. Let's extract the papers on the basis of impact investing and sustainability, right? So let's try to extract the papers using the field impact investing and sustainability, right? So let me take you to this. There is many searches that you can do. You can see here, when you open this, search within article title, abstract keywords, author. On the basis of authors also you can search, source title. So what we will be restricting ourselves will be article title, abstract or keywords. So here inverted commas, you have to use the inverted commas. Let's say impact investing, inverted commas, add search field. Let me put let me put here the word or, right? So I'll show you the difference in everything. Sustainability, right? And inverted commas closed. So let's understand here. What I have done is I want to search those papers that article title, abstract or keywords has the word impact investing. Please look at this. Let me increase the font size if that is possible for this. Okay. I hope you can see it. So what we are trying to do is we are trying to extract those paper that has the word impact investing in its article title, abstract or keyword, right? We want one more thing, that is we want to search the word sustainability as well, but it has to be and, let it not be, because we want only those papers that has both the words, that is called as impact investing and sustainability, right? So we are trying to extract those papers. Let me click onto this search. Let's see what 67 documents have come, right? 67 people who have already written on the papers impact investing and the sustainability. So let me refine my research. Look, impact investing, right? This word, let me take you here. This word impact investing, this word can be impact इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, है ना? एंड दिस वर्ड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल भी हो सकता है ना? तो इन दैट केस वी वांट, व्हाट डू वी वांट? We can use a wild card like this star, है ना? We can use a wild card. This is called as a wild card. It means what? It means टी के बाद इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट के बाद अगर ING है, MENT है, वो सबको लेगा. I hope you understand Hindi English both. Is that okay? Hindi Yes, English ma'am. both, है ना? Okay. So what we are here is, look, so what I will be doing is sustainable का sustainability भी तो हो सकता है ना? So what I will be doing is I'll be using the wild card instead of writing the whole word impact investing. So let's understand how does it makes a difference now. Let me go to my Scopus database, search database. एक minute. Let me increase the font size. Look, what I will do is I'll put a wild card here. है ना? Now you can see how many papers it has come. It has extracted 67. Let's see
the number will increase then. No. Sustainability. This is the wildcard, right? Let me search for it. Here is the search button. There's some issue into this. Ek minute, let me. Impact, investing, sustainability. एक मिनट बी स्पेलिंग गलत हो रहा है एक मिनट हाँ स्पेलिंग गलत एक मैम सस्टेनेबिलिटी की स्पेलिंग में आप स्पेलिंग गलत हो रहा है हाँ मेरे को भी वही लग रहा है सस्टेनेबिलिटी SUSTAINABILIT अगर आप इसको बी तक रखेंगे तो शायद दिखा देगा वो ये नहीं इसमें स्पेलिंग SUSTAINAB रखा था सर मैंने एक मिनट कुछ प्रॉब्लम now it will show up till B it will show एक मिनट इसमें कोई एरर दिखा रहा है एक मिनट इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबिलिटी अभी तो क्या है ये बिल्कुल इससे पहले आई डिड दिस एक मिनट लेट मी पुट टेक इट फ्रॉम हियर ओनली हाँ 125 कैन यू सी स्पेलिंग देख लेना भाई स्पेलिंग शुड नॉट बी रॉन्ग राइट सो यू कैन सी फ्रॉम हियर earlier it was when you have not used the wild card how many documents have you received 67 documents right now after using the wild cards so how many documents we have received 125 documents 125 जी है ना so there is a difference so you must make use of the wild cards right now even now you want to just look at this spine surgery let's read this title the environment impact of spine surgery and path to sustainability so you can see this some of the papers they are not for our field I'm from management so some of the papers doesn't seem to be from my field so what we can do is you can see from here on the left hand side I hope you can see it let me increase the font size onto this ठीक है तो इसको लिमिट भी कर सकते हो यहाँ पर look at this so let's limit it to our subject area business management and accounting social sciences economics econometric and finance right so this also you can do that then is your document type if you want only articles then you can only click on the articles right so let's limit to इतना ही करते हैं and देखते हैं how many papers do we get so we got 73 documents so I think this is more than enough and we can start our systematic literature right so let me tell you one more important thing I hope till here it is clear सबको क्लियर है यहाँ तक मैम आई हैव अ क्वेश्चन इज देयर एनी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पेपर्स वी नीड टू डू द एसएलआर एक बार ना जस्टिन पॉल की आई वाज लिसनिंग टू हिज वीडियो सो ही सेड 43 is you can even go for 43 number of papers for systematic literature review even let me tell you even we have done a scoping review with 27 papers scoping review with 27 papers SLRE का था वो भी पार्ट तो वो that got accepted वो तो ये कहता है ना कि हम लास्ट में 20 पेपर्स के रिव्यू के ऊपर काम कर सकते हैं बट एसएलआर के अंदर नहीं सर वो उसका आप एक बार जैसे जस्टिन पॉल की मैंने वीडियो सुनी थी मतलब मुझे जहाँ पूरा जहाँ तक पता है सो इट इज अराउंड 43 पेपर्स मिनिमम एंड स्कोपिंग रिव्यू दैट पेपर ऑफ माइन गॉट इवन अभी एक जर्नल में दैट गॉट एक्सेप्टेड इन सी कैटेगरी एंड स्कोपर्स सो दैट हैज ओनली 27 पेपर्स स्कोपिंग रिव्यू के थ्रू मैंने किया था एंड जस्टिन पॉल की एक वीडियो सुनना उसमें लिखा उसने मिनिमम 43 पेपर्स का आप रिव्यू कर सकते हो अगर आपके पास क्योंकि सर एक्चुअली क्या होता है कई टॉपिक्स पे ना आपको मिलते ही नहीं है यस मैम उसके पीछे एक रीजन है अगर आपको नहीं मिलते हैं जैसे कोई टॉपिक होता है जिसमें है ही नहीं है तो मिनिमम अगर आपको रिव्यू करना है तो 43 इज गुड इनफ फॉर मी राइट but ma'am we are from medical sciences and हाँ जी we can publish the paper with 10 reviews also अच्छा okay that is a good thing I come to know okay because आपके और भी कम होते होंगे I think है ना
you must be having less number of papers, Less right? number of papers, and those are published in PubMed and Scopus. Okay, okay, Therefore, nice. those are minimum Requirement. quantity. Okay, okay, fine, good, great. अच्छा, अब okay, so ये आपने जितनी भी चीजें ली हैं, है ना, whatever conditions that you have written right now, right? So you have to look, you have to copy it from here. These becomes your keywords. Let me show you how to write it. This is one of my, what you have to write, मैं अब आपको लिखना भी थोड़ा सा बता रही हूँ. So what you have to do is, like, when you are writing a paper, है ना, so you have to give the inclusion and exclusion parameters also for paper selection. What are the things that you have included, what are the things that you have excluded, so you have to write it here, है ना. So this is one of the table that will become a part of your SLR paper. The what we have done right now, we have extracted the papers. Let's say on this particular topic we have got 73 documents, right? Now you have to write everything into your now research methodology. This is a part of your research methodology, right? So it has a different kind of research methodology. ये तो अभी आपने क्या देखा? This is how to extract the papers from the scopus. Now there is a research methodology, and that is entirely different from the normal paper, right? Normal paper में ये नहीं होता ना. इसमें क्या होता है? इसमें ये होगा कि how many papers do you extracted? What were the keywords? Let me copy it here. मैंने क्या किया था यहाँ से? What I have done is I have copied this line. ये देख रहे हो आप? ये यहाँ पर आ जाता है. What are the parameters that you have taken? So these are the keywords that you have taken, right? So this, as it is, you copy it here and put it into your paper. So this research methodology ka this becomes a part. What else becomes a part? Exclusion and inclusion criteria. अभी आपने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन किया ना, यहाँ पर ये कुछ चीजें इंक्लूड करी और कुछ को एक्सक्लूड किया. कैन यू सी, लाइक व्हाट वी हैव इंक्लूडेड इज द what is the subject area from which the papers has been included. So this is what you have to write. You have taken the articles only, not the book chapters and all that. So you can do English, only English papers you have taken, right? So these becomes the part of your exclusion and inclusion. This all has to be written in your research methodology. So research methodology is this thing, right? इसके अंदर there is one more important thing, that is a PRISMA model. Let me take you to the PRISMA model. This is a normal paper. Let me close it down. ये बहुत सारे खुल गए ना. There's another paper of mine. ये रहा PRISMA model. Okay. Let me take you to a PRISMA model. This is the methodology part of a SLR paper, है ना? तो आपको planning the review, exclusion, inclusion criteria. So this becomes a part of your paper. Now this is your PRISMA model. This is a very famous model that has been given by Mohar et al. 2009. This normally becomes a part of the SLR. So what we have to do, there is 4 stages to it, right? The records identified using Scopus. Total records हमारे कितने आए थे पहले? It was more than 100, right? उसके बाद articles from the journals were included. हमने उसमें क्लिक किया था ना साइड पे. We have यहाँ पर जो क्लिक किया था आर्टिकल्स या जर्नल्स, पब्लिकेशन स्टेज, यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, राइट? तो उसके बाद कितने आर्टिकल्स आए? एक्सक्लूड. जैसे इसमें मेरे 300 आर्टिकल्स आए थे इनिशियली, उसमें से 100 मैंने एक्सक्लूड कर दिए थे, तो जर्नल्स के रह गए, राइट? या आपको इसमें देखना है, इसी के अंदर देखना है, तो मैं आपको ये भी बता सकती हूँ. सबसे पहले हमारे पास कितने आर्टिकल्स आए थे? इट वाज 101, है ना? उसमें से फिर हमने हमने फिर सिर्फ जो अपनी जो सब्जेक्ट एरिया था उसमें करे, तो फिर कितने हैं? 67, है ना? फिर आपको क्या करना है? आपको एक बार इसको रीड भी करना पड़ता है ना? अभी भी हो सकता है कुछ पेपर्स इज नॉट फॉर आवर कैटेगरी, तो हम उन पेपर्स को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, है ना? तो वो आप कैसे करोगे? आप
एक मिनट में प्रिज्मा मॉडल करा रही थी पहले वही, हाँ जी। तो फिर उसके अंदर से फिर एक्सक्लूड करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर अब ये भी हो सकता है आर्टिकल्स इन प्रेस हैं, आर्टिकल्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन, तो उसको भी रिमूव कर दिया, फिर कितने बचे, है ना। फिर आफ्टर जो लास्ट में अगर जैसे अगर आप 2 डेटाबेस से कर रहे हो या कोई इररेलेवेंट है, डिड नॉट हैव एब्स्ट्रैक्ट, फिर आपने एक्सक्लूड करा, तो ये फाइनल नंबर आ जाता है। लेट मी रिपीट दिस अगेन। ये जो आपका प्रिज्मा मॉडल है, दैट इज the prisma model is a how you have extracted the papers from this scopus database. Uski summary hoti hai basically ये, right? And this gives you this gives your paper strength, right? मतलब अगर आप इसको दिखाते हो, है ना, तो इट विल गिव अ पिक्चराइजेशन ऑफ हाउ यू हैव इंक्लूडेड द पेपर्स फ्रॉम स्कोपस। व्हाट आर द क्राइटेरियाज कि आपने एक्सक्लूड किया, है ना, कितने पेपर्स को एक्सक्लूड किया, आपको इनिशियल कितने पेपर्स मिले, ये सारा कुछ आप इस मॉडल में दिखाते हो। एंड दिस मॉडल इज कॉल्ड एज प्रिज्मा मॉडल, राइट। एंड इसके नॉर्मली जब आप रिसर्च मेथडोलॉजी लिखते हो तो ये सारा कुछ आप इसमें लिखते हो। लाइक लुक एट दिस, यहाँ पर मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, कैन यू सी टू दिस, द कीवर्ड्स यूज्ड इन द स्टडी इंक्लूड्स दिस, सो एवरीथिंग हैज टू बी मेंशन्ड, व्हिच बूलियन ऑपरेटर यू हैव यूज्ड, एंड और कौन सा लगाया आपने, स्कोपस डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट किया, कहाँ से कहाँ तक एक्सट्रैक्ट किया। सो एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन इज टू बी रिटन हियर, exclusion inclusion criteria, right, conducting the review, and uske baad reporting, wo that is the last stage. So this all it becomes the part of your research methodology. I hope this is clear till here. Please raise your hands if it is clear till here. Yes, any questions till now? No ma'am. रेफरेंस फॉर प्रिज्मा इज मोहर एट ऑल। पेपर चाहिए कोई आपको तो आप मेरा पेपर भी ले सकते हो और ये आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। आई विल सेंड यू द पेपर, डोंट वरी। Okay, ma'am. आई विल सेंड यू द पेपर फॉर द प्रिज्मा मॉडल, फाइन, नो And इश्यू। ma'am, please share these slides to us so that we can work on that side by side. Slides, okay, I'll do that, no Ma'am, issue। if possible, please share the slides, ma'am, after completing the session. Actually, Mohammed, what I am doing is this is my PPT, but I'm not using the PPT. I have not used the PPT at all. Have you seen? I'm just writing off my Yes, own. ma'am. You are This is working the on it, document. ma'am. You are working document. Okay, no issues, ma'am. Thank you. But what I can do is I'll share the papers that I'm showing it to you people. This I'll do. Or if you want, I can save this document as well. ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है जिसमें मैं लिख रही हूँ, इसकी हेडिंग्स वगैरह को मतलब बोल्ड करके मैं आपको ये वाला पेपर ये शेयर कर सकती हूँ, और ये भी शेयर कर दूंगी पीपीटी। इफ यू कैन थिंक इट इज यूजफुल, यू कैन डू दैट। और आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, है ना सर? भोलानाथ सर, will they get the recording? I feel you will get the recording as well, don't worry. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, रिकॉर्डिंग Yeah, मिलेगी yeah. तो आपको Yeah, that yeah. will be good enough. Okay, fine. So हाँ, okay, now a most important part is now how to extract this data now, है ना। अब आपके पास डेटा तो आ गया, अब इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना, you know. Now let's do that. There is a button called select all the papers that we have extracted, है ना। तो उसके बाद go to export, right? Go to export, click onto this, just in a click, है ना। इन सबको टिक कर लो, टिक everything that we need. It means that we need everything. So I have clicked on all to this CSV file, Excel फाइल में मुझे चाहिए सारी इंफॉर्मेशन हर पेपर की। 67 पेपर्स हैं, सॉरी 73 डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, तो उसकी सबकी एक एक पेपर की इंफॉर्मेशन आएगी। और यहाँ वर्ड है एक्सपोर्ट, let me do that export. So you'll see there is a file that will get downloaded, Scopus file. Can you see? अच्छा, one more thing, let's, अगर हमें चाहिए साथ के साथ बिब्लियोग्राफी भी कर लो भाई, क्रिएट द बिब्लियोग्राफी, राइट। यहाँ पर देयर इज वन ऑप्शन, ये थ्री डॉट्स यू कैन सी फ्रॉम हियर, क्लिक ऑन टू दिस एंड क्रिएट बिब्लियोग्राफी। साथ ही साथ बिब्लियोग्राफी भी बना लो। बिब्लियोग्राफी मीन्स आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए, इन सबके
हमें रेफरेंसेस भी चाहिए, है ना? बाद में तो बहुत मुश्किल होती है, वैसे एक्सेल फाइल में भी आएगा, बट स्टिल कौन से वाले स्टाइल में चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मेंशन है। मतलब कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी हमने इस चीज में, सो इट इज ऑलरेडी देयर कि आपको शिकागो स्टाइल चाहिए, हार्वर्ड चाहिए। सो लेट मी डू इट इन एपीए फॉर्म, राइट? तो क्रिएट बिब्लियोग्राफी, आई क्लिक ऑन टू दिस, तो आपको सारे पेपर्स की 73 पेपर्स हैं, उसकी सारे की बिब्लियोग्राफी भी आ जाएगी, राइट? लेट मी शो इट टू यू, जस्ट टेकिंग टाइम, लुक एट दिस। ये सारे रेफरेंसेस आ गए इसके, है ना? तो आपको ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। जो पेपर एक्सक्लूड करना है वो भी कर सकते हो आप, इसको सेव भी कर सकते हो। एनीवेज, मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे कि अभी आपने बोला कि 73 की 73 पेपर्स को सिलेक्ट करके आप सेव कर लो। अगर इनमें से कुछ पेपर हमारे ओपन एक्सेस ना हुए, तो जो मतलब कि हम रीड ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या हमें उसको डाउनलोड करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, पेपर तो आप डालोगे। आप इसके एब्स्ट्रैक्ट से भी तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो ना। नहीं तो आप एक काम भी कर सकते हो, कुछ पेपर्स अगर नहीं निकलते हैं तो गूगल स्कॉलर पे भी डाल सकते हो। दैट इज अ वेरी गुड सोर्स टू गेट द पेपर्स फ्रॉम। तो लुक एट दिस, यहाँ पर आप डाल सकते हो। क्या क्या होता है, कई बार मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज, ये अपने पेपर डाल देते हैं, है ना? यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एक साई हब करके भी वेबसाइट है, आप वहां से भी निकाल सकते यस हो। मैम, ऐसे तो काफी लोग अपने रिसर्च गेट की प्रोफाइल पे भी डाल देते हैं। हाँ, बहुत है। जगह मिल जाते हैं, हाँ। तो ओके। अब ये देखो, ये फाइल आ गई अब आपके पास, है ना? सो फर्स्ट कॉलम, ये देखो, ये सारा इंफॉर्मेशन अबाउट द 73 पेपर्स, लुक एट दिस। दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग दैट वी गेट। ये 73 पेपर्स हैं। 74 इसलिए शो कर रहा है, फर्स्ट इज द हेडिंग्स, ये हेडिंग्स है ना ऊपर, सबसे ऊपर। नाउ ये information is about all the papers, 73 papers, right? So what is important now? This is your abstract. So what I normally do is I click onto this abstract, I select the another worksheet and copy it here. So what I do is, the next thing is wrap text kara, right? एक extract को, now what you have to do is you have to जैसे ऊपर ऊपर से रीड करते हैं ना abstract, आपको सभी abstract को रीड करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, है ना? तो मैं बताऊंगी आपको रीड क्यों करना है, रीड क्यों करना है, राइट? सो अभी इट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है? अब आपने यहाँ से पेपर्स ले लिए। Like we are skimming up over here, ma'am. Am I correct? हाँ जी, As if we are skimming over here for our related topic. यस यस, हाँ बिल्कुल, कि हो सकता है कि कोई पेपर हमारे यूज का ना हो, स्टिल हो सकता है ना ऐसा। तो व्हाट वी हैव टू डू इज we have to delete that paper, right? And let me tell you one more thing, when we are writing a systematic literature review, please do it in a group, not single. Like let me give you an example. I'm very happy, abhi na piche we got three people. This is about me, my friend Manisha ma'am, and my friend Suchita ma'am. So what we did is, three of the females, we got together, we connected together, I don't know how, and we wrote a paper. And and it was such a good synchronization between me and those two friends of mine. So we write a very good paper, है ना? और we divided the papers, like अब 73 documents है इसमें. So it is not easy for me alone to do this. So what we have done when we were writing systematic literature, we divided the papers. So it is, let's say, 72 papers है ना? So first कितने 72 3 24 papers first she has read, next 24 another ma'am, and next 24 me. So this, when you are writing a systematic literature review, it has to be a teamwork. Believe me to this, it is not possible for a single person or two people to write it. It is always better you go with more and more number of people when you're writing the systematic literature, right? So you have to read this, right? I hope till here it is all clear. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई प्रॉब्लम? सबको समझ आ रहा है? Please raise your hands if you are able to understand. I have a question. जी, Can we have systematic literature review out of our thesis, because we also do an extensive literature review there? I'm not able to understand, Avantika. Can you please repeat what you are saying?
Ma'am, I'm asking, can we make an SLR review out of our thesis? Because it's an individual's job and we have a lot of literature in that. But it's a बट single उसमें person's job. नहीं नहीं आप बट उसको करोगे कैसे? लिटरेचर एसएलआर पेपर कैसे डेवलप करोगे? आपको एक पर्टिकुलर थीम पे चाहिए ना, तो आप पहले डेटाबेस में से पेपर्स एक्सट्रैक्ट करोगे ना, लाइक दिस। इसके बियॉन्ड Like आप this. कैसे? इसके जैसे बियॉन्ड हाँ तो आप मेरा कर रही thesis का अगर एक टॉपिक है उसका मैंने लिटरेचर रिव्यू इसी तरीके से कर दिया है. हो किस Like I तरीके am से? looking for I was looking for मतलब literature related to my thesis. अब I have found like 57 or say 100 papers regarding that related to that. So ma'am, can I make a paper out of it? अच्छा, But वो मुझे ये कि वो मुझे नहीं individual. मुझे एक बात नहीं मुझे एक बात बताओ, आपके उसमें सारे लेटेस्ट पेपर्स हैं। आप ये देखो ना, अगर आप डेटाबेस से पेपर उठाते हो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। आपको यहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, सबके एब्स्ट्रैक्ट मिलते हैं, मतलब Right, यहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। अब इससे right, करो right. ना, उससे कैसे? नहीं और नहीं मैम, मैं इसमें वही पूछ रही हूँ कि मैम एक सिंगल, अब जैसे रिसर्च का अगर मेरा कोई टॉपिक चल रहा है बट वो एक सिंगल बंदे का, अगर आई टेकन वन मैं सिंगल समझ पर्सन. गई, मैं समझ गई। बट इसमें देखो ना, आप ईयर्स भी 23 के बहुत सारे पेपर्स हैं, हो सकता है आपने कोई पेपर्स ना उठाए हो। आपने जरूरी तो नहीं है ना कि लेटेस्ट। अच्छा, एक चीज और, आप नहीं मैम. कोशिश करो कि लेटेस्ट पेपर्स भी उठाओ। आप ये देख रहे हो इसमें कितने सारे पेपर्स हैं जो सिर्फ 23 के हैं। लुक एट दिस, 22। तो जरूरी तो नहीं है ना कि आपने 23, 22, 21, 19 और 18 के बहुत पेपर्स उठाए हो सकते हैं कुछ आपने मिस कर दियो। और ये Yes ma'am. पेपर्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको जो मेन ईयर्स हैं उनके पेपर्स उठाने जरूरी होते हैं, राइट? Yes ma'am. हाँ, ओके। सो लेट्स मूव अहेड। Till here I think it is clear. Now let's move to the next important aspect when we are talking about, and that is a data analysis. So we can see there is a difference. I hope now you can see and understand the difference in the research methodology of a normal paper and the paper written through SLR. That is a systematic literature review, है ना? ये समझ आ रहा होगा, है ना? ये इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम क्या करते हैं, प्रिज्मा मॉडल बनाते हैं, एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया डालते हैं, एंड ये जो कीवर्ड्स थे हमारे वो सब डालते हैं और इसके ऊपर लिखते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट नाउ, till now, है ना? This is also, let me show you this diagram. So when you are writing a paper like this, तो अपनी ना, I was, let me give you another example. I was working with one of my colleagues, and he is a very good institute. So what he told us was, like, if you are making more and more diagrams and you are presenting your results through pictures more and more, like look at this. Now this is a figure this person has made. This is a very good paper of Zahur 2020, and this is also on a systematic literature review. So how he has present his results? So first he has talked about the research questions, you can see. फिर उसके बाद scope of the study, conceptual boundaries, keywords, study time. Like, what I'm trying to tell you is, like, in paper आप उसमें लिख के तो बता रहे हो, है ना? आप ये सब चीजें लिख रहे हो, बट स्टिल इफ यू आर मेकिंग अ फिगर फॉर दिस, सो इट इज गिविंग मोर एज टू योर पेपर, है ना? इसमें बहुत क्लियरली किसी भी पर्सन को, कोई भी पर्सन, इफ इट इज गोइंग टू रीड योर पेपर, ही विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस, अबाउट योर पेपर. तो what is important is to make more and more figures, more and more figures, you can see. So this is the first figure that you can make in your paper as well. I'll forward this paper to you as well. And this is only introduction, methodology part, till methodology part. So he has made prisma model भी बनाओ, ये model भी बनाओ, है ना? So it will give more emphasis or more representation of your paper in a better way. Pictures are very important, right? So let's move to the next important aspect of it, that is your data analysis part. अब data analysis में क्या आता है of a SLR, right? अभी हमने क्या, अभी तक तो आपको पता है नॉर्मल पेपर जब आप लिखते हो, नाउ डेटा एनालिसिस में क्या लिखते हो, क्या करते हो? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, लेट मी टेल यू दिस. ये जो आपकी फाइल है ना, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? नाउ इसके बेसिस पे, इस एक्सेल फाइल के बेसिस पे आप सब काम करोगे अपने, है ना? तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल. Now, what is important here is, let me increase the font size. Keyword, moleculars, chemical, 1 minute.
जैसे आप एनालिसिस करो, राइट, यहाँ पे ईयर देख सकते हो आप, दिस इज द ईयर। तो आपके जो 73 पेपर्स हैं, राइट, तो कौन कौन से ईयर्स में लिखे गए हैं। तो लेट मी टेक यू टू दिस, कैसे बना सकते हो इसको, लेट मी शो यू हियर। यहाँ पर आपको एक टेबल आपका क्या बन सकता है, ईयर्स ऑफ स्टडी फॉर दिस इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग जो टॉपिक है एंड सस्टेनेबिलिटी जो टॉपिक है, उसमें किस ईयर में सबसे ज्यादा स्टडी की गई है। तो आप इसको कैसे 2023, 2022, 2021, जो फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं बनाते थे हम, वी यूज्ड टू मेक, है ना। तो आपको यहाँ पर लाइक 1 2 3 4 5, इसके आगे 5, इसके आगे जितना भी नंबर है 10, लेट्स से इसके आगे लेट्स से 15, है ना। सो दिस विल बी वन टेबल व्हेन वी आर टॉकिंग व्हाट वी आर डूइंग। लेट मी रिपीट दिस अगेन, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस पार्ट। हम क्या कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस पार्ट ऑफ द SLR। सो व्हाट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये इनके बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हो। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी, द टॉपिक इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, राइट। सो ये आपको सब कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम दिस फाइल इटसेल्फ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या कर सकते हो, ये जर्नल के नाम है, जर्नल्स के नाम है। इसको भी कंट्रोल सी किया आपने, इसका भी एक टेबल बन सकता है आपका इसी तरह से कि कौन कौन से जर्नल्स में से कितने कितने पेपर, मतलब विच जर्नल हैज मोर पेपर्स विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, किस जर्नल में। ऐसे ही आप इसकी भी फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हो, राइट। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन से 2 पेपर्स, और भी हो सकता है नीचे हो। तो एक टेबल इसका, ग्राफ इसका बना सकते हो। लेट मी शो यू द ग्राफ, जो फुल एंड फाइनल ग्राफ देखते इसमें है कि नहीं। लाइक लुक एट दिस, ये कंट्री के बेसिस पे भी बना सकते हो आप इसे, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द कंट्री ऑफ स्टडी, कि कौन कौन सी कंट्रीज में कितनी कितनी स्टडीज हुई हैं, है ना। स्टैटिस्टिकल टेक्निक कौन सा यूज हुआ है। अगर लुक एट दिस, कि अगर इसमें आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक नहीं मिलता है, इसमें नहीं मिलेगा, तो आपको ये कहाँ से निकालना पड़ेगा, ये आपको एब्स्ट्रैक्ट से निकालना पड़ेगा कि इसमें टूल एंड टेक्निक कौन सा यूज हुआ है। तो इसका एक अलग कॉलम बना सकते हो आप यहाँ पर आप बना सकते हो। जब आप एब्स्ट्रैक्ट को रीड कर रहे हो, टूल्स एंड टेक्निक्स, है ना, तो आप इसका अलग कॉलम बना सकते हो और यहाँ लिख सकते हो कि कौन कौन सी टेक्निक्स और टूल्स यूज किए हैं, है ना। उसके बेसिस पे वी कैन मेक अनदर टेबल लाइक दिस, राइट। You can make, so what we are talking about is, we are talking about the data analysis part। एनालिसिस, डेटा को एनालाइज करना, किस किस बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हो। आप कंट्री के बेसिस पे एनालाइज कर सकते हो कि कौन सी कंट्री है जिसने इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग पे सबसे ज्यादा पेपर्स लिखे हैं, राइट। सो दिस इज वन टेबल दैट यू कैन मेक। और कौन से स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाई है, दैट इज अनदर टेबल दैट यू कैन मेक। एंड इफ इट इज नॉट गिवन इन योर दिस स्कोपस के पेपर्स में, इसमें नहीं दिया डायरेक्टली, सो व्हाट यू कैन डू इज, आप एब्स्ट्रैक्ट को रीड करो और यहाँ पर टूल्स एंड टेक्निक्स को लिखो। इवन एक कॉलम जरूर इसका भी बनना चाहिए, दैट इज द थियरीज यूज्ड इन द पेपर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, थियरीज यूज्ड। सो दिस इज अनदर एस्पेक्ट। एक पर्सन था, उसका पेपर, लेट मी चेक इफ आई कैन गेट इट, उसमें उसने बहुत थियरीज देखा था। आई डोंट रिमेम्बर द कौन सा पेपर था, उसने सारी थियरीज मेंशन करी थी, बहुत सारी। लुक एट दिस, ये एडीओ मॉडल, ये सॉरी प्रिज्मा मॉडल, आई सेंड इट टू यू अबाउट दिस। ये आपको लिखना भी बताया हुआ है, हाउ टू राइट द रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट इनटू दिस पेपर। लुक एट दिस, ये सारा दिस इज अ रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट है ये। स्क्रीनिंग, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, इसको मुझे नहीं पता। लिस्ट ऑफ जर्नल्स, टॉप साइटेड आर्टिकल्स भी है।
tomorrow I'll show it to you, right? So इसमें आप analysis किस किस basis पे कर सकते हो, इन सब basis पे. हाँ, so what I was talking about is theories used. तो जरूरी नहीं है कि हर पेपर में theories हो, but जिस पेपर में theories हैं आपकी, so please write it down. And उस theories का भी एक table बन सकता है, theories used in the data analysis part, right? और किस किस चीज का बन सकता है, let me आप ये भी बना सकते हो कि आपके जो पेपर हैं, जैसे जो जर्नल्स हैं, जैसे हमने अभी जर्नल्स देखे, तो उनकी जर्नल्स की इंडेक्सिंग कैसे है ना, और हमारे में उन जर्नल्स के कितने नंबर ऑफ पेपर्स हैं, ये देख रहे हो आप, इंडेक्सिंग एंड एबीडीसी रैंकिंग. इसमें बताया हुआ है, लुक एट दिस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में से एक पेपर है दैट इज इंडेक्स्ड इन स्कोपस एंड एबीडीसी रैंकिंग ए कैटेगरी. तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक टेबल है जो आप बना सकते हो फॉर योर एनालिसिस पार्ट, right? Or ADO model, that will be doing it tomorrow, not today, है ना. तो I hope any queries till now, किसी को कुछ पूछना है till here? Ma'am, do we get the recorded videos of the yesterday session? Today's session. Yesterday as well as today, yeah. Today and tomorrow. They Yeah, started from Yeah. today itself. Na? Today is Yes. the day one. Yeah, today yeah. is So the sorry, day. yeah. मिलेंगे ना सर, we'll get the, Yes, we'll ma'am. be sharing the videos, Yes, है ma'am. ना. I'll share the link. Yeah. Thank you so much. हाँ जी उज्जवल जी, आप कौन सा पार्ट कह रहे हैं, बिब्लियोग्राफी पार्ट अगेन, व्हाट दैट पार्ट, डेटा एनालिसिस पार्ट? बताएं उज्जवल जी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. स्कोपस डेटाबेस, like this is the Scopus database, yes? Do you want me to do it again? Can you please speak what you want to know? Acha, okay. Please switch off, please turn off your mics, all of you. Balaji, please turn off your mic. Please turn off your mic. Okay. Okay, so what we have to do is, like, let me edit this. एक मिनट. Scopus.com है ना. Look at this. So what you have to do is you have to put your keywords here. Let me increase the font size onto this. I hope now you can see, है ना. So you just see to this, what is your keywords, you know, what is the words, what is the topic that you want to search for. So impact investment or impact investing, it can be either things. So what I have done is, impact invest के बाद I have used the wildcard star and inverted commas, and I have put the word and between. And sustainability ka bhi, again I have done what, I have used the wildcard, and I have clicked onto the search button. So I have got 125 documents, है ना? So you can see to this, I have got the 125 documents in totality. Now you can start reading, just read this. यहाँ पर आ रहा है environmental impact of spine surgery and the path to sustainability. So that is not included for the management people. So what we can do is, we can put some limit to, we can do that. So what I have done is, यहाँ पे business management and accounting, social science, economics, econometrics, environmental science भी if I want to put, right? So I can यहाँ पर limit लगा सकती हूँ मैं अपने यहाँ पर, like I want only articles, not the book chapters, conference paper, review and book. I don't want. I want the papers only in the final stage, right? Source title I don't want. अगर आप A कैटेगरी पेपर्स ही लेना चाहते हो सारे, तो आप ये भी कर सकते हो. कैन यू सी टू दिस, जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन पे लगा दो. वैसे बहुत कम पेपर्स आएंगे, 5 ही है इसमें ना सिर्फ. तो लेट्स नॉट पुट हियर, बट मतलब you can do this as well, right? So that's it. Limit to, what I have done is limit to, right? So let's see how many papers do we get. We get 72 papers, right? 72 papers is the total. So what you will be doing after this is, select all of them. CSV export is the button, and I told you before this, you can put all the bibliography by clicking here. This is create bibliography, so all the papers will come,
all the references of the paper will come here, all the 72 papers. And if you want to do this export, you want to see सबको, you click on everything, right? And किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, CSV एक्सेल फॉर्म में हमें चाहिए, एंड क्लिक ऑन द बटन एक्सपोर्ट हेयर. So what it will do is it will download one CSV or Excel file. You can see here on the left hand side, left bottom side, that we have got. तो ये आपकी फाइल आ जाती है और इस तरह से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट? एनीथिंग एल्स? व्यू साइटेशन ओवरव्यू. इसमें ना और भी बहुत सारे ग्राफ्स आपको मिलते हैं. सी टू दैट. हाँ, ये रहे. जस्ट लुक एट दिस. ये आपको यहाँ पे भी ग्राफ पे मिल जाते हैं काफी सारे, सिर्फ साइटेशन नहीं और भी होते हैं. There is so much that you can explore in here, you know. बहुत कुछ है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो इधर. There is so much. We'll see tomorrow then, है ना? Anything else? Yes, ma'am. I have a question. जी. मैम, जैसे कि आपने अभी बहुत सारे अपनी जब स्क्रीन शेयर कर रहे थे, तो आपके एक पेपर में था कि आपने स्कूपर्स एंड एबीडीसी का डाटाबेस यूज किया. तो एबीडीसी का डाटाबेस से हम कैसे पेपर उठाते हैं और उनको मर्ज कैसे करते हैं? नहीं, एबीडीसी से नहीं उठाया मैंने. आप ये देखिए, ये जो जर्नल्स है ना, हाँ जी, हाँ जी. यही जो जर्नल्स हैं, कुछ एबीडीसी में भी है और कुछ स्कोपस में. जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन है, एबीडीसी ए कैटेगरी. So you have mentioned that it is that these journals are the part of the ABDC group. हाँ. Okay. Yes. Okay, ये देखो ना, ये वाला जो टेबल है वो हमने इसमें से निकाला है कि जो जर्नल्स आए हैं वो किस किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. बाय चांस सारे एबीडीसी भी है. हाँ, सारे एबीडीसी है. ओके मैम, वन मोर क्वेश्चन. जैसे कि आपने बताया था स्टार्टिंग में ही कि हम स्कूपर्स, वेब ऑफ साइंस और पबमेड का डाटाबेस यूज कर सकते हैं. जी. तो जब हम उनको यूज करेंगे, वहां से एक्सट्रैक्ट करना तो मेरे को आता है, लेकिन उनको क्लब कैसे करेंगे और क्लब करके यूज कैसे करेंगे? अच्छा, वो आपको ऐसे करना पड़ता है कि जो पेपर्स है ना, पेपर के टाइटल. हाँ जी. पेपर का जो टाइटल है, दोनों के ऊपर नीचे लिख लो जो पेपर का टाइटल है ना, फिर उसके ऊपर सॉर्ट कर दो. ओके. तो वो इकट्ठे आ जाएंगे सारे पेपर. जो भी पेपर डिफरेंट उसके हैं वो सारे एक जगह पे इकट्ठे होते रहेंगे टाइटल के बेसिस पे. ओके, गॉट इट. तो वो डिलीट करते रहो आप उनमें से एक. जो डबलिंग होगी वो डबलिंग डिलीट. और आप ये भी कर सकते हो कि डुप्लीकेट को येलो कर दे. इसमें मैक्रो होता है ना कोई एक. यस मैम, दैट इज. हाँ, तो उसको मैक्रो को यूज करो और इधर से सॉर्ट कर दो टाइटल के बेसिस पे. ऊपर नीचे रखो. तो वो जैसा हम मैनुअली करते हैं वही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है ना कोई? नहीं. और तो क्योंकि आप दो डेटाबेस को अलग से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ना, आप दो डेटाबेस में से फिर कैसे करोगे उसे अदरवाइज? नहीं मैडम, मेडले में अगर कर दिया ना तो डुप्लीकेट्स डिलीट हो जाएंगे. मेडले का मुझे आइडिया नहीं. हाँ, मेडले में नहीं, तो आप फिर उसके ये सारी इंफॉर्मेशन, मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट आई यूज दिस ओनली. और मैम एक चीज हो रहा है कि हम जब भी स्कूपर्स का डाटाबेस यूज करते हैं या वेब ऑफ साइंस का यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द पेपर्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, मतलब कि ओपन एक्सेस नहीं होते. बहुत फ्यू पेपर्स ही ओपन एक्सेस होते हैं. और जब तक हमारे पास कुछ पेपर्स ओपन एक्सेस नहीं होंगे, बेस ही नहीं होगा, तो हम अपना पेपर कैसे बनाएंगे और लिखेंगे? आपको मैंने अभी वही बताया था. एक तो साइहब एक वेबसाइट है, दैट इज वन ऑफ द थिंग. जो पुराने पेपर्स हैं उसमें ना नॉर्मली जैसे अब 23 चल रहा है तो 22, 23 के नहीं निकलते नॉर्मली, बाकी सारे पेपर्स निकल जाते हैं साई हब में. या फिर आप गूगल स्कॉलर पे भी जा सकते हो. आप गूगल स्कॉलर इज अ वेरी गुड वेबसाइट. उस पे क्या होता है, लोग जैसे ना अपने पेपर्स डाल देते हैं. हाँ, वो अपनी प्रोफाइल में ऐड कर देते हैं. हाँ, गूगल स्कॉलर पे तो वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाती है. काफी पेपर्स की तो यहाँ से मिल जाती है आपको गूगल स्कॉलर से. Basically this will gonna consume very much time. But even on Google Scholar, we don't have access to some papers. हाँ बिल्कुल. उसके बाद साई हब है, फिर उसके बाद फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में आपको जाना पड़ेगा. Even though रिसर्च गेट पे मैम मोस्ट ऑफ दी लोगों की अपनी प्रोफाइल होती है, हाँ, तो वो अपनी प्रोफाइल में पेपर डाल देते हैं. हाँ, उसमें भी मिल सकते हैं आपको, बिल्कुल मिल सकते हैं.
जो ऑनलाइन पेपर पड़ा होगा ना वो आपको जरूर मिल जाएगा, हाँ वो जी। तो मिल जाता है। हाँ, और नॉर्मली लोग डाल भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी Many मैम। people they put their papers, yes. Anything थैंक यू सो else? मच मैम। It's okay. Anything else? Ma'am, can you tell about the keywords putting one that table one you have shown with the five column table, five rows like that. The keywords and how it is being done. I think it's table one. Table one. Yes, ये yes, 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 yes. Can you explain that one only? As due to some network connectivity, I could not listen anything after 6:30. ये ये कीवर्ड्स तो ये थे ना, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग और इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट, और करके डाला होगा ना ये, और टाइम स्पेंड जितनी टाइम के निकले आपके पेपर्स, दैट इज व्हाट यू कैन पुट। इसी में बता देते ना मैं आपको, नहीं तो ये दिस इज हियर ना, यहाँ पर आपको बेसिकली डालना है। This is how you have to look at na impact investing. I have वो told भी you एक बार this is दिखा दीजिएगा this वो is the टेबल। wild card that I have used. Impact invest, क्योंकि investing भी हो सकता है, investment भी हो सकता है word, है ना। कुछ में impact investing ले लिया होगा, कुछ में impact investment, है ना। तो यू हैव टू यूज द वाइल्ड कार्ड। इसी तरह से सस्टेनेबिलिटी में भी सस्टेनेबल भी हो सकता है, सस्टेनेबिलिटी भी हो सकता है। तो ये दोनों पेपर्स, दोनों तरह के पेपर्स निकालेगा जिसमें वर्ड सस्टेनेबल भी है और सस्टेनेबिलिटी भी है। तो यू हैव टू यूज द वाइल्ड कार्ड एंड देन पुट द सर्च की। आप कितने भी इसमें कर सकते हो, ऐड और भी कर सकते हो, एंड और भी लगा के कर सकते हो, है ना। तो बहुत मतलब इसमें काफ़ी और भी कर सकते हो। अभी हम एक पेपर पे काम कर रहे थे, तो उसमें भी हमने 3 बार एंड और लगाया। तो बड़ी अच्छी एकदम से कीवर्ड्स, ये जो आपके कीवर्ड्स हैं दैट हैज़ टू बी प्रॉपर, ये बहुत अच्छे से आपको सर्च करने की ज़रूरत है, तब आपके पास बहुत अच्छा डेटाबेस तैयार हो जाता है। जो आप फाइल्स एक्सट्रैक्ट करते हो ना, वो बहुत अच्छा आ जाता है आपके पास। Ma'am, तो please दिस इज़ show व्हाट इज़ once वेरी the इम्पोर्टेंट। table. Once the table. How we व्हिच have put it. That table, table one. Which one you are talking? ये वाला कह रहे हैं आप? Table one, table one. Just now you have shown me. Table one. ये वाला, अच्छा इसके अंदर ये हाँ तो हाँ इट ये इज, हाँ इसमें तो डेटाबेस कौन सा यूज किया, स्कोपस, और आर्टिकल पार्ट सर्च्ड, मतलब ये टाइटल, अब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स हमने क्या लिया था इसमें, इस ये बताया है। यहाँ Yes, पे ma'am. ये लिया Easy ना to आर्टिकल understand that टाइटल। one. Easy to हाँ, understand that way. आर्टिकल टाइटल अब्स्ट्रैक्ट ये लिया है ना। और उसके बाद फील्ड कौन सी सर्च की, सिर्फ बिजनेस और मैनेजमेंट, और स्ट्रिंग्स, सर्च स्ट्रिंग्स क्या डाले थे ये, और टाइम स्पेन इतना, बस दैट्स इट। आपको दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अभी आपको ना एक टेबल दिखाया था, एक मिनट, रिसर्च क्वेश्चंस इसमें था शायद। ये वाला डायग्राम आप देखो ना, दिस इज वेरी गुड। एक ये प्रिज्मा मॉडल इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। मोहर मोहर एटॉल का डायग्राम मैंने आपने दिखाया था, थोड़ा एक बार दिखा दीजिए ये वाला स्टाइल मोहर एटॉल। अच्छा, मोहर एट ऑल, ये रहा सर। एक मिनट, कहाँ चला गया, एक मिनट, लेट मी सी वेयर इट इज। हाँ, इसमें था वो, हाँ ये है, दिस इज व्हाट इट इज, टोटल नंबर ऑफ मैम कैन यू रिकॉर्ड्स। शो द पिक्चर full screen, that one, that diagram picture in full, how from the beginning part, it is from the beginning part, हाँ, identification stuff। ये बिगनिंग ही है। हाँ 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 मैम थोड़ा ऊपर कीजिए थोड़ा। हाँ 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 फुल दिस डायग्राम। इज, ये नीचे वाला ओके नहीं आ पा रहा है, एक बार आप देख लो यहाँ पे, फिर मैं आई टेक यू डाउन। ओके ओके मैम। ये सबसे पहले आपने टोटल रिकॉर्ड्स कितने आए आपके, फिर उसमें से हम कुछ एक्सक्लूड भी कर देते हैं ना, ओनली आर्टिकल्स फ्रॉम द जर्नल्स, सिर्फ हमने जर्नल्स के आर्टिकल लिए तो 100 एक्सक्लूड कर दिए, 200 बच गए हमारे पास। फिर उसके बाद आपने आर्टिकल्स इन प्रेस नहीं रखे, आर्टिकल्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन भी नहीं रखे, तो टोटल कितने आर्टिकल्स रिमूव कर दिए, 100, तो बच कितने गए ऊपर से, 200 माइनस 100। तो उसमें से कुछ फिर से आपने सर्च किए, वो इररेलेवेंट थे, खुद रीड किए सारे एब्स्ट्रैक्ट, और जिसके एब्स्ट्रैक्ट नहीं थे इतने थे, तो आपके पास कितने बचे, 64। तो ये बिल्कुल जो आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हो व्हेन यू आर एक्सट्रैक्टिंग द पेपर्स फ्रॉम द स्कोपस एनी डेटाबेस, so this is what you have to write in this prisma model. I hope it is clear. यस मैम थैंक यू। Yes, ma'am, clearly. Anything else? किसी को कुछ और पूछना है? Excuse me, ma'am. हाँ जी कीर्ति।
Ma'am, what's the ideal time span to be covered? Like I just saw in your paper, you had covered from 2008 onwards. ये it But is depends ना there how many papers do you get from this. ये आपको बताएगा Scopus database. so there's no ideal time span like past 10 years? No. This will tell you जहाँ के भी papers होते हैं वही आपको extract करने हैं. Okay, ma'am. Thanks. My question is, ma'am, जी. there is a need to finalize the title or not? Yes, the title has to be finalized. Definitely, yes. This is the first objective. The objective has to be set, na? And the title will be based on the objective itself. Okay. First of all, you have to decide the title and then go further. Yes. Decide मतलब exact title नहीं, मतलब जैसे आपको second hand fashion पे काम करना है, तो आपको पता है कि you are working on a second hand fashion, तो आप उसी को देखोगे ना, उसी की files को extract करोगे, papers को extract करोगे. So that is what is important. Anything else? Then can you get the recording of the session? जी, definitely you'll get the recording of the session. एक क्वेश्चन है मेरा. जी. कुछ लोगों ने पूछा भी था उसमें कि अगर स्कूपर्स डेटाबेस नहीं है, स्कूपर्स में एक्सेस नहीं हो तो क्या कौन सा डेटाबेस ले सकते हैं? वैसे तो मुझे लगता है स्कोपस और वेब ऑफ साइंस ही अच्छा है, बट अदरवाइज पबमेड भी है, बट मुझे लगता नहीं है उसमें इतने पेपर्स मिल पाएंगे आपको. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट. यू टेक द हेल्प ऑफ द अदर पीपल्स जहाँ पे हैं, जिनकी इंस्टीट्यूशंस में हैं, आप उनसे हेल्प ले लीजिए ना. इट इज़ नॉट अ बिग डील. आपको स्कोपस की डेटाबेस फाइल ही तो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. जी. Ma'am, can you share all the papers that you have used? हाँ जी. Can you share all the papers that you have used? I mean, at least the name of the papers. Definitely, I'll share the papers only. Don't worry. I'll share everything. जो भी मैं कर सकती हूँ मैं कर दूँगी. Don't worry. And how we can extract data from Web of Science? We have just learned. It's the same process. I'll tell you tomorrow then. If you want to learn, then I can show you tomorrow. And that would be great, ma'am. That would be really appreciated. Thank you. It's okay. I'll do it. No issues. Anything else? I hope you learned something new today into this session. I hope you can raise your hand if it is like आपको समझ आया कुछ and the things were good, right? Chalo, anyways. Yes, great. we got the clarity. Thank you so much. It's okay. Nice. Fine. ठीक है. So see you tomorrow. Okay. Bye. Ma'am? हाँ जी. Yeah, ma'am, I just wanted to say one thing. The topic which you have chosen, that is quite new. It was not known to us earlier. And the way you're explaining each and everything is wonderful, ma'am. Your voice is full of clarity. Soft voice. You have soft voice. It's quite understandable. Yeah. Thank you so much. Good things need to be appreciated, ma'am. Thank you very much, Namita ma'am. Welcome, ma'am. Thank you very much. Yes. Fine. Okay, good day, ma'am. Good day, everyone. Thank you so much. Good day to you too, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay, ji. Okay. Bye. Thank you, ma'am. Okay, bye, ma'am. Bye. Welcome.